by two major methods. One is direct gene transfer, that is by electroporation, microinjection, particle bombardment, etc. And another one is agrobacterium mediated. Genetic engineering has been applied to produce GM plants resistant to biotic and abiotic stresses, having high oil content, delayed fruit ripening, improved nutritional qualities, and many more. One of the most significant achievement is the introduction of gene responsible for nitrogen fixation to the non-leguminous plants. Now, what is nitrogen fixation? It is conversion of atmospheric or the free nitrogen into nitrate. Plants अपनी metabolic activities के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में ही यूटिलाइज करते हैं. क्लियर? नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज. दे मे बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, जो कि लेगुमिनस प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन बना करके नोड्यूल फॉर्म करते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. एंड सेकेंड वन इज BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, बिलोंगिंग टू साइनोफाइसी, जिसमें हिट्रोसिस नाम के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं. उनके अंदर में तीन जो कंडीशंस हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए. फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेज, वो प्रेजेंट है. सेकेंड वन, एन एरोबिक कंडीशन शुड बी देयर. नाउ 3 लेयर्ड जो सेल वॉल है वो बाहर से परमिट नहीं करती, और अंदर फोटोसिस्टम सेकंड इज एब्सेंट. एज वी नो, फोटोसिस्टम सेकंड अगर एब्सेंट है यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नॉट देयर, देयर इज नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन. तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रही है. एंड एटीपी, थर्ड कंडीशन इज एटीपी. कोई भी एक्शन एक्टिविटी है उसके लिए एटीपी रिक्वायर्ड है. तो एटीपी उसको कहां से मिल रहा है? बाय साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ओके, तो तीनों कंडीशंस जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी है वो तीनों उसको मिल रही है. फर्स्ट वन इज एनारोबिक कंडीशन, फोटोसिस्टम सेकंड इज एब्सेंट हियर. सेकंड, नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम इसमें प्रेजेंट है, और एटीपी जो चाहिए वो उसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से सफिशिएंट अमाउंट में मिल रही है. यानी और थर्ड जो मेथड हम आगे जाकर के पढ़ेंगे दैट इज बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड, जिसमें नोड, निफ और हब जीन्स उनको ट्रांसफर करके ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऑब्टेन कर रहे हैं. क्लियर? तो नोड जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन, निफ जीन फॉर द responsible for nitrogen fixation, for the synthesis of nitrogenase. Nitrogenase, they are isolated from Klebsiella and have been successfully transferred and expressed in Escherichia coli, yeast, and even in tobacco plants. Second one is insect resistant. BT crops are insect resistant. Bacillus thuringiensis, जो कि एक soil bacterium है, with different cryoproteins, and these cryoproteins are toxic to insects. First, the second better example is insect resistant varieties. Next one is quality improvement. In this case, tearless onion. They are produced by gene silencing. Colorless cauliflower with high amount of vitamin C and is a potential source of choline, important in stress and cardiovascular disease. Tomatoes with the high amount of anthocyanin belongs to the flavonoid subclass of polyphenols having antioxidant properties. Now the term antioxidant, actually free radicals present in our body, they are destructive in nature. They act on DNA, RNA, proteins, etc.
Antioxidants are free radical scavengers. Okay, free radicals, they are responsible for pathogenesis of various diseases, and antioxidants are the scavengers, free radical scavengers है, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, कैप्चर करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन, the enzyme polygalacturonase is responsible for ripening and softening. Flavor saver tomatoes were developed by anti-sense technology. Improved shelf life, increased fungal resistance, and increased viscosity make them suitable for long-term storage. That is about 45 days. Golden rice have enhanced vitamin A and iron content. Beta carotene is precursor of vitamin A. Then GM corn, it requires 6% less pesticides, and its yield is about 7.6% higher. Elimination of virus. I think one slide is here. Oh, right. Then wheat control is the biggest challenge in crop production. Roundup ready crops are resistant to glyphosate-based herbicides, and similarly, T25 maize are glufosinate ammonium tolerant. Genetically engineered tobacco resistant to the herbicide bromoxynil is the first commercially engineered crop marketed in Europe. Elimination of virus like CMV and papaya ring spot virus. Cauliflower mosaic virus is one of the most common plant viruses, causing a wide range of symptoms like distorted foliage, chlorosis, etc. Now, unlike primary metabolites, secondary metabolites are produced by the plants but are not reutilized by them for their metabolic activities. For plants, they are the waste, but for us, for the human beings, they are of much economic value. Example, alkaloids, steroids, phenols, gum, resin, latex, etc. Secondary metabolites can be produced by cell suspension culture, hairy root culture, and by immobilized cell culture. In hairy root culture, Agrobacterium rhizogenes insert its tDNA into RI plasmid. Example, one best example is production of plumbagene using this technique. And cells or enzymes can be immobilized through encapsulation, entrapment, adsorption, covalent bonding, or cross-linkage. Production of pharmaceutically important and commercially valuable compounds in transgenic plants is molecular farming. Thus, transgenic plants can be used as bioreactors for the molecular farming of vaccines, antibiotics, plasma proteins, growth factors, etc. Here, two important anti-cancer alkaloids, vincristine, vinblastine from Catharanthus, Sadabahar, and ginsenoside, having wide pharmaceutical properties, can be obtained from Panax ginseng. Germplasm conservation. It is the most successful method to conserve endangered and commercially valuable species. Now, two methods, in situ means conservation in their natural habitat, उनको अपने आवास में रखते हुए उनका संरक्षण, that is in situ, and that is done by national parks, biosphere reserves, sanctuaries, and even through sacred groves, that is देव स्थल, क्योंकि mainly जो destroy कर रहे हैं वो है tribals, जहाँ एक dense vegetation, वहाँ पर एक मंदिर निर्मित करके अगर उसको डिक्लेयर कर दिया जाए देव स्थल, now tribals जो है उसको destroy नहीं करते. तो most effective method is
sacred groves. XC2 away from their natural habitat, जिसमें seed banks, botanical gardens, in vitro storage, or cryopreservation. Now, in vitro conservation includes cold storage, that is at known freezing temperature, 1 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक, low pressure and low oxygen storage, and cryopreservation, that is at very low temperature, minus 196 degrees centigrade in liquid nitrogen, where metabolism is 0. Next, to sum up, these are the PTC methods and their applications which we have discussed. List of major achievements of PTC, and at the end, I would like to say that PTC has a promising role for the introduction of agronomically important characters and production of economically important products at large scale. I wish to say a few words about Dr. Vinod Sharma, PhD in PTC and working as a lecturer in BN University, Udaipur, finding innovative ways to make his own income. He decided to launch a plant tissue culture firm, Shubh Labh Agro Biotech, awarded for business and service excellence by Rajasthan government, and serves as an inspiration to young entrepreneurs. I think it is the best example that how the potential applications of PTC play an important role in promoting entrepreneurship and agribusiness. Stevia, you all know about this. It is a sweet sugar substitute, 0 calories, non-nutritive sweetener. Thank you, all of you. Thank you so much, ma'am, for this informative session. I believe all the participants will gain a lot of knowledge, especially in the field of plant tissue culture and its role in promoting entrepreneurship in agriculture. Thank you, ma'am, for sharing us your vast research, and we really value your in-depth knowledge and concern on encouraging the farmers as well as entrepreneurs. And we do send our best wishes and success in your path, madam. Thank you so much. Thank you. So now we'll be moving forward to welcome our next guest speaker, Dr. Muhammad Awais Piracha. Dr. Piracha obtained his PhD in soil science from University of Sargodha in 2020. During his PhD studies, he was awarded International Research Support Initiative Program funded by HEC Pakistan as visiting research scholar at Texas A&M University, USA. Moreover, he has also been awarded as Agricultural Youth Leadership Award under Agricultural Youth Awards 2019 by National Agricultural Youth Commission, Pakistan. He has published 17 research articles and 4 abstracts in the national and international journals and presented his research work at 3 international conferences in Pakistan, including International Conferences of Soil Science Society of Pakistan. And Dr. Piracha is currently working as an assistant professor on a visiting basis at the Department of Soil and Environmental Sciences, College of Agriculture, University of Sargodha, Pakistan, and is teaching graduate level courses related to soil science. So, sir, I wholeheartedly welcome you and would like to hand over this virtual stage to you. Over to you, sir. Piracha, sir, are you available? Silo, he will take 5 to 10 minutes. He is not available. Okay. While sir, while we wait for sir, is there any questions that we would like to ask the presenters that we've had for of tonight in the chat box? If there is any questions that we would like to raise.
If not, then I would like to highlight some of just give me a second. I would like to highlight oh yes. He's coming for 2 minutes. Okay. So while we're waiting for that, let me highlight the aims and objectives of this course. As now we're embarking on this 7 days international training come workshop. So let me read out what are the aims and objectives. The chief goal mouth of this 7 days training come workshop is to build fundamental skills for using agricultural research, entrepreneurship, and skill development for nation's growth in a variety of applications. So we're hoping that the candidates will learn the most recent ideas behind various skill-based agro practices throughout this program. And the key points that we want our participants to gain is knowledge of business potentials in many fields of agriculture and related disciplines, and to comprehend and learn the abilities needed to operate a successful business, and also to comprehend the value of entrepreneurs and their function in the marketing economy of the agricultural sector, to decipher the basic and technological know-how of agri-capitalization and skill development, and to draw inspiration from the success of various industry mavens, and to learn the fundamental methods for creating a successful business strategy through live sessions with experienced and successful agribusiness impresarios, and to provide US-made agricultural advancement or revive traditional Indian agriculture. So we still have 4 more days to go, and in these days we are lucky that we have a very learned and educated and experienced speakers in the coming days. So the participants are really lucky, and we hope we get the most out of this workshop. And the PPTs will be provided to you. The PPT will be provided to you after the sessions. Nama, sir? Anyone from the participants, if you would like to share what you expect and from this conference, and how is it going so far? If you want to share, while we wait for Piracha, sir. Okay. Amit Deep Mishra, if you want to share, you can turn your audio on and share. And yes, I can read that you request for the PPTs to be provided in the WhatsApp group. I will, okay, the coordinators will think about it, and if it's possible, they will surely send in the group. Okay, is that so? Let me. Okay, just a second. Yes, you're unmuted.
Am I audible, ma'am? Yes, you are. Good evening to everyone. This is Mm. Amit Mishra. Ma'am, I'm from Abhyakti Foundation, Ranchi. Okay. Actually, we are working for small and medium farmers. You can say marginal farmers, and basically they are tribals. और Yes. हम उनका क्या कर रहे हैं कि स्केल अप कर रहे हैं, Mm. स्किल करते हैं उन्हें हम इंटीग्रेटेड वेस में, जिससे कि वो ग्रीन इकोनॉमी के एक पार्ट बन सके, ना कि व्हाइट कलर जॉब्स के लिए वो शहरों में जाएं Mm. और वहाँ पे 10-15-20 हज़ार की जॉब के लिए वहाँ पे जाएं, और क्या है अपने गांव की लैंड्स को छोड़कर जो बंजर भी हो रही हैं, और वहाँ पे उनके जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके अभाव में बेकार हो रहे हैं। तो हम उनको कनेक्ट करते हैं अपने ही यूथ्स को, वुमेन्स को, कि आप गांव में ही डिसाइड करो, यहाँ से माइग्रेशन ना करो। उन्हें हम स्किल करते हैं, जैसा भी उनके साथ हुआ था, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग Mm. सपोर्ट के साथ साथ हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं उन्हें, जिससे कि वो पहली बार में सेटअप कर जाएं और Mm. आगे बढ़ें। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है आपके इस प्रोग्राम से वो ये है कि आप स्मॉल, मार्जिनल और कह सकते हैं कि मीडियम टाइप की जो यूथ्स हैं, Yes. जो ऐसे Yes. फैमिली Yes. से आते हैं, फार्मर्स की फैमिली से आते हैं, उनके Mm. लिए ज़्यादातर प्रैक्टिकल जो बेस्ट सॉल्यूशंस हो Mm. बिजनेस के लिए, एग्रीकल्चर में और उसके Mm. अलाइड एक्टिविटीज में वो एंगेज्ड हो सकें, और थ्रू आउट द ईयर हो सकें, ना कि 2-3 मंथ्स का या सीजनल Mm. कोई आइडिया हो। इट शुड बी Yes. Yes. थ्रू आउट द ईयर हो, जिससे वो Mm. हाईली एंगेज्ड रहें उस पीरियड में अपनी प्रैक्टिसेस में, और अपने गांव में ही एक छोटा मोटा बिजनेस खड़ा कर सकें। Mm. जैसे अभी हम एक नर्सरी सेटअप कर रहे हैं 10 यूथ्स के लिए, Mm. हॉर्टिकल्चर नर्सरी सेटअप कर रहे हैं। वो प्लांट्स का कैपेसिटी उसका 10 to 20,000 पर डे प्लांट्स का वो होगा, Mm. जिससे वो प्रोड्यूस कर सकें थ्रू आउट द ईयर, ऑफ सीजन भी कर सकें, क्योंकि वो एनवायरमेंटल कंट्रोल उसमें है सिस्टम। तो आप क्या है कि इससे क्या होता है कि हमने 10 यूथ्स को एक तरह से गांव से बाहर जाने से रोका। इस तरह से बहुत सारे यूथ को किया, लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। Yes. 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 तो इस तरह के बिजनेस मॉडल्स, इस तरह के स्किल प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें Mm. इस पे डिस्कस हों, पीपीटी इस पे शेयर हों, जिससे हम और Mm. भी लर्निंग्स ले पाएं। एंड उसके साथ साथ क्या है ना कि हमें चाहिए कि आप, अगर कुछ ऐसे भी स्पीकर्स हैं आपके पास जो कुछ गवर्नमेंट से सब्सिडीज मिल रही हैं यूथ्स के लिए, Mm. स्मॉल एंड मीडियम जो बिजनेस करने जा रहे हो, तो जो उनके Okay. पास सब्सिडीज अवेलेबल हो Mm. सके उनके सपोर्ट के तौर पे, तो Mm. उनको डिस्कस करें, उनकी स्कीम्स को डिस्कस करें। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर से बहुत सारी हमने फार्मर्स को लिंकअप करवाया, मतलब गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, तो उनको नर्सरी मिली। 5 से 10 लाख का सेटअप वो करते हैं स्टार्टिंग में। उसके साथ क्या है कि आप कंट्रोल इन्वायरमेंट में अपना प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, नर्सरी ग्रो कर सकते हो। और Mm. इसी तरह से पोल्ट्री यूनिट का है, गोट्री यूनिट का है, और वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट का है। तो इस तरह से गवर्नमेंट लिंकेज से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो इस तरह का Mm. कोई स्पीकर हो जो इन सारी चीजों को लिस्टिंग कर सके, क्योंकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा हट के है इन चीजों Yes. से, ना कि ऐसा Yes, so कॉन्फ्रेंस है। we'll work on that. And yes, this feedback is very important because without the feedback, we won't be able to know we won't be able to request our speakers also to say that this is what the participants are requesting. This is what is the need of the hour for this participant. So thank you so much, Mr. Amit Deep Mishra. Your You're welcome, ma'am. feedback is noted. Exactly, Yes. and thank you so much for giving me this opportunity to share my thoughts. And I would say one thing कि बीच बीच में यहाँ पे unmute होना चाहिए to share our thoughts too, because it should be a two-way conversation. Then it will be better. और आगे भी आप प्लीज कंटिन्यू करें ऐसी चीजों को, और इन Yes, चीजों को yes. भी इसमें इन्वॉल्व करें अगर इस बार ना हो तो। And I believe if you have heard yesterday's speaker, Yeah, I Dr. have Sanjay heard them. Soni, They were very good yes, speaker. there he said about mushroom cultivation. Mushroom cultivation is also very good, and year-round you can do except for the month of June. So with your question, mushroom cultivation is also one very good way of entrepreneurship for the small and marginal farmers, and also हेलो pickle. साइलो, Yes, yes, स्पीकर sir. आ गए, स्पीकर आ गए। Okay.
Okay, okay. Thank you so much. So now we are really eager to hear from Piracha sir. So sir, we welcome you, and I hand over the stage to you. Thank you very much, madam. Uh, I am sharing my presentation. Is my presentation showing to the Yes, audience? yes, sir. It's visible. Okay, thank you. Sir, please select the slide share mode. Yeah, yes, yes. It's working? Yes, sir. Okay. First of all, I would like to thank you for organization to invite me to deliver my presentation. Today, the topic of my presentation is arsenic behavior in different textured soil, amended with phosphate, rock, and farmyard manure. I belong to Department of Soil and Environmental Sciences, College of Agriculture, University of Sargodha. I have done my PhD studies in 2020 and now working as an assistant professor uh, at the Department of Soil and Environmental Sciences. These are the outlines of my presentation: introduction, review of literature, then study objectives, methodology, then study, and then finally conclusion and future prospects. First of all, arsenic is a metalloid, belongs to group 5A of the periodic table, and it is a heavy metal. Arsenic is the 12th most abundant element in earth crust with average concentration of about 3 milligram per kg soil. More than 200 arsenic containing minerals are exist in soils. Frequently, arsenic associated with sulfur in minerals like arsenopyrite, realgar, and orpiment. Arsenic is crystalline metalloid with three allotropic forms that are gray, light black to red, and yellow. More than 30 countries all over the world would have been reported to affect due to the presence of excessive amount of arsenic in the environment, including soil and water. The arsenic concentration has reached enormous level in many countries, including Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, China, India, Mongolia, and even Pakistan. Now, little bit introduction to arsenic. Our environmental pollution with heavy metals may challenge the sustainability of agriculture and subsequently human and animal health. Arsenic is considered one of the most toxic elements found in the environment because of its deleterious effects on soil, water, and plants. Millions of people are suffering from serious health disorders due to drinking arsenic polluted water, including different countries of subcontinent, Bangladesh, India, and other countries, including Australia, Japan, and South America. Arsenic is released into the environment by both natural as well as anthropogenic activities. Arsenic is present in most plant species, but very little is reported about its functionality in plants metabolism. The general tolerance level of arsenic in plants is about Sorry to 2 interrupt, milligram Piracha per sir. kg. Can you speak in bilingual mode if possible? Hindi, English, Urdu, anything? Yes, I can speak in Urdu. Yes, sir. It's preferred by the participants. So if you can use the bilingual mode. Thank you so much. In Urdu, you want to, I can speak in Urdu. Hindi, sir. Can you speak Hindi? Yes, Hindi is Urdu, like, Yes, sir. both are like. Any Hindi, Urdu, English mix. Okay. Okay. एक्सेसिव एक्चुअली आर्सेनिक हैवी मेटल है और ये इंसानों के लिए और पौधों के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो इस हवाले से ये थ्रेट है काफ़ी मुल्कों के अंदर कि इसकी कंसंट्रेशन सॉइल में भी बढ़ रही है और इसकी कंसंट्रेशन हमारे जो है एग्रीकल्चर लैंड में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है।
ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से, और नेचुरली भी ये सॉइल में पाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 3 मिलीग्राम पर केजी एवरेज ये है इसकी मौजूद है सॉइल के अंदर। और मोस्टली ये जो सॉइल के अंदर आता है ये पानी के जरिए से आता है। और आर्सेनिक की जो मैकेनिज्म है, ये प्लांट्स में कैसे टॉक्सिसिटी काज करता है, तो फर्स्ट वन इसका ये है कि ये फास्फोरस के साथ बहुत इसकी स्ट्रक्चर मिलता है, केमिकल स्ट्रक्चर इसका फास्फोरस से मिलता है। फास्फोरस भी टेट्रा ऑक्साइड है, पेंटा पी H2PO4 है, और आर्सेनिक भी आर्सेनिक O4 है। तो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से ये फास्फोरस के साथ इंटरफियर करता है, फास्फोरस की अपटेक को भी डिक्रीज कर देता है। तो एक्चुअली करता क्या है कि ये एटीपी को डिस्टर्ब कर देता है। एटीपी आपको पता है कि ये सेल के एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी जो है ना वो कंपाउंड है। तो जैसे ही आर्सेनिक एटीपी को डिस्टर्ब करता है तो प्लांट एनर्जी क्राइसिस में चला जाता है। दूसरा ये क्या करता है कि फास्फोरस की और मैंगनीज की अपटेक को कम कर देता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस प्लांट्स में आ जाता है। इसके अलावा स्पेसिफिक आयरन टॉक्सिसिटी कर देता है। जब इसकी क्वांटिटी प्लांट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इवन ये प्लांट डाई हो जाता है इसकी हाई टॉक्सिसिटी की वजह से। और इसके अलावा ये एंजाइम इन एक्टिवेशन में भी इन्वॉल्व है आर्सेनिक, के प्लांट्स की एंजाइम एक्टिविटी को इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ प्लांट की रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा ये जो प्लांट्स के क्लोरोफिल कंटेंट हैं उनके साथ भी इंटरफेयर करके उनकी प्रोडक्शन और उनको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो स्लो हो जाता है, और अल्टीमेटली ये प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है हमारे एक्सपेरिमेंट का, वो हाइपोथेसिस है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आर्सेनिक ऑन चार्ज पार्टिकल्स, कि ये चार्ज पार्टिकल्स जो सॉइल के अंदर हैं वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, उनके साथ ये एब्जॉर्ब हो सकता है, जो ताकि जो है ना इसकी टॉक्सिसिटी को कम कम किया जा सके, और ताकि जो है ना हमारी जो एग्रीकल्चर सॉइल्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया कर सके। तो इसके साथ साथ ये सॉइल कंपोनेंट्स कौन से हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो इसकी टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं या इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसमें ज़्यादातर ह्यूमस है, क्ले कंटेंट है, और अगर एसिडिक सॉइल्स हों तो उसमें ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैंगनीज और एल्यूमिनियम भी है। और जैसे हमारी सॉइल्स हैं अल्कलाइन है, यहाँ पर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आर्सेनिक इन सॉइल्स। तो ये हमारा हाइपोथेसिस है। इसके अलावा understanding of the physiochemical behavior of arsenic in soil is important for quantifying the persistence and bioavailability of arsenic in the environment. बहुत से लोगों ने इस पर वर्क भी किया हुआ है, जैसे मैंने इसमें जिक्र किया कि स्मिथ 1998 के अंदर, और मुख्तलिफ और अदर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव जो हमारी रिसर्च का था, असेसिंग द इफेक्ट ऑफ सॉइल टेक्सचर on arsenic fractionation, phytoavailability and plant uptake under exogenous supply of arsenic, कि सॉइल टेक्सचर का क्या इफेक्ट आएगा आर्सेनिक की फ्रैक्शनेशन के ऊपर और उसकी अपटेक के ऊपर। सेकेंडली एवेल्युएटिंग द रोल ऑफ फॉस्फेट रॉक ऑन आर्सेनिक अवेलेबिलिटी। फॉस्फेट रॉक हमने एज अ एक्सटर्नल यूज़ की थी, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा आर्सेनिक की अपटेक के ऊपर, प्लांट अपटेक के ऊपर और अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर। और लास्टली हमने फार्मिया मेनोर भी अप्लाई किया to check the arsenic availability for plants, and we use sunflower for our experimentation. And lastly, we determine the interactive effect of both phosphate rock and Fabian manure on arsenic solubility and uptake by sunflower in different texture soils. We use 3 different textures: sandy, clay, and silt textures. This is the experiment fractionation and phytoavailability of arsenic in different texture soils artificially contaminated with arsenic. We have discussed introduction. I am leaving this introduction. Only objectives of study I am explaining. To analyze the distribution of different arsenic fractions in 3 texture soils. And secondly, to investigate the effect of soil texture on arsenic availability and uptake by sunflower. And third one, to assess the impact of different levels of arsenic on growth and yield of sunflower in different texture soils. This is the methodology of our experiment. We use 3 soil textures, including sandy, loamy, and clay soils, and we use
different levels of arsenic from 50 to 200 milligram per kg soil. It's a pot experiment, and we apply arsenic as sodium arsenate. And this is the parameters we used: arsenic accumulation and distribution in plant parts, including roots, shoots, leaves, and grains. And we also calculate bioaccumulation and translocation factor. And lastly, we calculate plant growth and yield factors and physiological attributes of sunflower. Now the results. First one is the keen yield of sunflower, and the different arsenic levels of arsenic. ये डिटरमाइन करता है कि जैसे जैसे आर्सेनिक का लेवल हम बढ़ा देंगे तो उससे अकीन यील्ड जो सनफ्लावर की वो डिक्रीज करती गई है। और उसके अलावा जो मैक्सिमम डिक्रीज आया है वो आर्सेनिक लेवल 200 के ऊपर आया था, और अंडर क्लेई सॉइल, अंडर सैंडी सॉइल, सॉरी, क्लेई सॉइल के अंदर एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई है आर्सेनिक की, एड्जॉर्ब कर लिए सॉइल पार्टिकल्स ने, सॉइल टेक्सचर ने, जिसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी अपटेक कम हुई है प्लांट्स में, और मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो टेक्सचर, जो क्लेई टेक्सचर है, उसने सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म किया है रिगार्डिंग अकीन यील्ड। नेक्स्ट है जी फोटोसिंथेटिक रेट ऑफ सनफ्लावर प्लांट। इसमें हम देख सकते हैं कि जो सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है वो क्लेई सॉइल ने परफॉर्म किया है। क्लेई सॉइल के अंदर सिंथेटिक रेट है सनफ्लावर का सबसे बेस्ट आया है, सबसे बेस्ट वैल्यू आई है एज कम्पेयर टू अदर सॉइल टेक्सचर्स, सिल्ट एंड सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है आर्सेनिक टॉक्सिसिटी की वजह से, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हुआ है आर्सेनिक टॉक्सिसिटी की वजह से। नेक्स्ट जी बायो अक्यूमुलेशन फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था फॉर रूट एंड स्टेम, हमने मेजर किया था। तो आर्सेनिक की ट्रीटमेंट के फ्राम 0 to 200 हम देख सकते हैं कि कंट्रोल लेवल में सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास बायो अक्यूमुलेशन फैक्टर की वैल्यूज़ आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू जो हाईएस्ट लेवल है आर्सेनिक का 200 मिलीग्राम पर केजी, उसमें सबसे लोएस्ट वैल्यूज़ हमें मिली हैं बायो अक्यूमुलेशन फैक्टर की। बायो अक्यूमुलेशन फैक्टर असल में होता ये है कि प्लांट ने कितना अपटेक किया अपने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, रूट्स के कितना अपटेक किया फ्रॉम सॉइल, इसकी रेशो होती है। ये एक फार्मूले के तहत हम कैलकुलेट करते हैं। ये स्टेम के लिए है इसकी वैल्यूज, कि स्टेम के अंदर कितना ये एक्युमुलेट हुआ है डिफरेंट टेक्सचर्स के अंदर। ये ट्रांसलोकेशन फैक्टर है कि डिफरेंट प्लांट पार्ट से कितना ये मूव हुआ है, ये स्टेम से रूट में, रूट से स्टेम में कितना मूव हुआ है, रूट से लीव्स में कितना ट्रांसलोकेट हुआ है। तो ये ट्रांसलोकेशन वैल्यूज हमें बताती हैं कि विद इन प्लांट आर्सेनिक कितना मूव हुआ है रूट से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स के अंदर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांसलोकेशन हुई है वो सैंडी टेक्सचर में हुई है, जो कि ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है, और जो ग्रे कलर के अंदर है क्ले टेक्सचर, इसमें कम हुई है ट्रांसलोकेशन विद इन प्लांट, आर्सेनिक की कोलेशन बहुत कम हुई है। ये सेम वैल्यूज हैं लीव्स के लिए कि रूट से लीव्स की कितनी मूवमेंट हुई है, आर्सेनिक की रूट से लीव्स में कितनी मूवमेंट हुई है। ये सेम पैटर्न दिखा रहा है जैसे कि पहले स्टेम की पैटर्न दिखा रहा था। कंक्लूजन जो हमारा एक्सपेरिमेंट का क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल आर्सेनिक इन डिफरेंट फ्रैक्शंस विद इन अ सॉइल वेरीड सिग्निफिकेंटली, कि डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में आर्सेनिक की फ्रैक्शन डिफरेंट आई है। और सेकेंडली सैंडी सॉइल्स बीइंग लो इन ऑर्गेनिक मैटर, iron, aluminum, calcium and clay content, that's why exhibit highest concentration of labile arsenic followed by loamy and clay texture soils. And thirdly, arsenic accumulation in roots, stem, leaves and grains of sunflower was also differ with soil texture. And we calculated that highest arsenic buildup in plants under sandy and last and least under clay texture soils. And fourthly, arsenic distribution in plant parts was ordered as roots have maximum accumulation as compared to leaves, and leaves accumulate more arsenic compared to stem, and stem are accumulate more arsenic as compared to grains। यानी रूट्स में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की एक्युमुलेशन हुई है और ग्रेन में सबसे कम आर्सेनिक की एक्युमुलेशन हुई है। एंड arsenic toxicity increase with exogenous arsenic supply in all the soil 3 texture soil samples।
कि जैसे जैसे हम आर्सेनिक की लेवल इंक्रीज करते जाएंगे ट्रीटमेंट का, उतना ही इसका टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा आता है प्लांट्स के ऊपर. Harmful effect of arsenic on plant growth and yield were maximum in sandy soil while least in clay soils, indicating that the effect of soil characteristics on arsenic behavior and phytoavailability in soil. So this is the presentation of our experiment, and and thank you. Any question for audience? I am available Thank you so much, for any Piracha, sir. question. I think the audience, they are understanding what you're trying to portray, and that's why there is no question in the chat box right now. So I think it is well understood. Thank you so much Thank you. for sharing your valuable knowledge about heavy metals, arsenic and its remediation with rock phosphate and FOM. It's very interesting. And I'm sure the participants have gained a lot of knowledge from Thank you. you, Thank you. and we wish that you will be blessed with more knowledge and success in your future endeavors. Thank you, sir. Thank you. Thank you So- very much. Okay, thank you, sir. On behalf of Thank you. Vital Vitech Agricultural Forum for Technical Education of Farming Society Kota, College of Sri Guru Gobind Singh Tricentenary University, and the entire organizing team, I deliver my heartfelt gratitude to all the speakers and participants for joining this international training come workshop program and being so patient and attentive, and also for giving us a very good feedback you. that we will be using for our future days. So thank you so much, and have a wonderful evening, everyone. Have a good night. Have a good night.